Hello my dear students, welcome back again in your GK class. In today's class, we are going to cover chapter number 17 and the name of the chapter is Lovely Birds. आइए birds के बारे में lovely birds कौन से हैं उनके बारे में cover करते हैं. क्या लिखा है देखिए, birds are graceful creatures who can fly, dive, hop, hover and flutters in the sky. वो सारे birds होते हैं. आइए देखिए सबसे पहला bird क्या लिखा है. It is found in Cuba. ये एक ऐसा bird है जो क्यूबा में मिलता है. Its weight is almost 0.056 ounce and it is average 2.75 inches in length का रहता है. Smallest bird है ये. क्या है ये? Hummingbird. Second we have the bird is bill which is 13 to 16 inches long. It is the largest pecilian in the world. ये कौन से हैं? Name as Australian pecilian bird. Next the third one. These extreme flightless birds which arms instead of wings were found in South America and had an estimated body weight of 3 meters की. ये है हमारे पास क्या? Brontosaurus. Largest carnivorous bird है वो भी. Fourth अब बात करें, the bird is called the pau of North, Eastern and South or Southern African and the great busters of Europe and Asia. It weighs about 40 to 42 pounds का रहता है. खोरी बस्टर नाम से heaviest bird है ये. Next, it has the largest wingspan of any living birds and can able to remaining in air without beating its wings of several hours at a time. Largest wingspan होता है इसका, ये है albatross का. फिर fastest flying bird. So the bird can be attained speed of 242 mph की स्पीड है. अंटार्कटिका में मिलेगा. कौन है ये? Black name as peregrine falcon. Falcon तो आपको पता ही है, मिलता ही अंटार्कटिका साइड है, ठंडे एरियाज में. सो ये थे हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बर्ड्स के बारे में ये चैप्टर. होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ग्रेट. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.